Now another colligative property is elevation of boiling point. Now what is elevation of boiling point? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा. अच्छा, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which its vapor pressure is equal to atmospheric pressure. अब atmospheric pressure यूजुअली हम ले लेते हैं 1 atmosphere. तो जब वेपर प्रेशर इज इक्वल टू atmospheric pressure which is equal to 1 atmosphere. वेपर प्रेशर 1 atmosphere के बराबर हो जाएगा जब the liquid will start boiling. फॉर एग्जाम्पल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 373 केल्विन. अ वेरी एक्यूरेट वैल्यू विल बी 373.15 केल्विन. ठीक है, तो ये हो गया वाटर का बॉइलिंग पॉइंट. इसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स दैट कि at 373 Kelvin the vapor pressure of pure water is equal to 1 atmosphere, which is also equal to atmospheric pressure. Now we have studied that vapor pressure of solvent decreases in the presence of non-volatile solute. जब भी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देंगे वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा. तो जब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? जब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर at which its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure will increase. We will have to heat that particular solution to a higher temperature so that its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure. As a result of which क्या होगा? उसका boiling point जो है increase कर जाएगा. So same thing is given here. The vapor pressure of an aqueous solution of sucrose is less than 1.013 bar at 373.15 Kelvin. In order to make this solution boil, अगर हमें इस solution को boil करना है, कौन से solution को? Solution of sucrose in water को अगर boil करना है तो its vapor pressure must be increased to 1.013 bar by raising the temperature. By raising the temperature above the boiling temperature of the pure solvent, that is water. जिस टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट बॉईल कर रहा था उससे हायर टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा सोल्यूशन को so that its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure, as a result of which boiling point will increase. Thus the boiling point of solution is always higher than that of the boiling point of the pure solvent in which the solution is prepared. Now in this figure y axis पे vapor pressure है, x axis पे है temperature. Now this graph, let it be 1. This is the graph for the solvent and this graph number 2, this is the graph for the solution. अब solvent को अगर देखें तो solvent का vapor pressure this point is equal to 1 atmosphere. At what temperature? Let this temperature be T naught B. ये वाले जो temperature है, at this temperature the vapor pressure of the solvent here is equal to 1 atmosphere. ठीक है, और इसी टेम्परेचर पे अगर सोल्यूशन का ग्राफ देखेंगे तो एट द सेम टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज लेस देन 1 एटमॉस्फेयर. तो एट टेम्परेचर T naught B वेपर प्रेशर ऑफ solvent, here the solvent is water, is equal to 1 atmosphere. But at the same temperature vapor pressure of solution is less than 1 atmosphere. ठीक है, as can be seen from this graph. Now at what temperature is the vapor pressure of solution also equal to 1 atmosphere? कौन से टेम्परेचर पे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा? दिस इज द टेम्परेचर TB. अब हम टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करेंगे सोल्यूशन का, तो सोल्यूशन का टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो एट अ टेम्परेचर TB as can be seen यहाँ पे vapor pressure of the solution is also equal to 1 atmosphere.
Here it is equal to 1 atmosphere. So the temperature at which vapor pressure of solution is equal to 1 atmosphere is greater than the temperature at which vapor pressure of solvent is equal to 1 atmosphere. So the temperature at which the vapor pressure of solution is equal to 1 atmosphere is greater than the temperature at which vapor pressure of solvent is equal to 1 atmosphere. तो क्या हो गया? Boiling point of solution is greater than the boiling point of pure solvent. A solution of 1 mole of sucrose in 1000 gram of water boils at 373.52 Kelvin at 1 atmosphere pressure. तो क्या हो गया? There is increase in the boiling point. अब increase in boiling point को हम कैसे शो करेंगे? Increase in boiling point is equal to boiling point of solution minus boiling point of pure solvent. This gives the increase in boiling point. Increase in boiling point is also known as elevation of boiling point. Now experiments have shown that for dilute solutions, the elevation of boiling point is directly proportional to the molar concentration of the solute in a solution. ये है elevation in boiling point. This is directly proportional to the molality of the solution. और proportionality constant हो गया Kb. So delta Tb is equal to Kb into molality of the solution. अब molality क्या होती है? Molality of the solution is molality is equal to moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. So molality can be written as moles of solute divided by weight of solvent in kg. And Kb, this is the proportionality constant, is called boiling elevation constant or molar elevation constant. It is also known as ebullioscopic constant. Unit of Kb is Kelvin kg per mole. Now मोलालिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? मोलालिटी की वैल्यू हो जाएगी मोल्स ऑफ सल्यूट. मोल्स ऑफ सल्यूट क्या होता है? वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट. W2 हो गया वेट ऑफ सल्यूट, M2 हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में गिवन है, वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम्स में गिवन है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा इन केजी. अब इस मोलालिटी की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में, दैट इज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या इक्वेशन मिल जाएगी? डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1. अब इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज कर देंगे तो M2 इज इक्वल टू 1000 into W2 into Kb divided by delta Tb into W1. तो अगर किसी unknown solute का molecular weight find out करना है, what we will do? A known mass of solute, suppose W2 grams of the solute is dissolved in a known mass of solvent, that is W1 grams of the solvent, and elevation in boiling point is determined experimentally for a solvent whose Kb value is known. Now putting all the values in the given equation, इस वाली equation में, putting the values in this equation, we can easily calculate the molecular weight of the unknown solute.